हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रुप थ्योरी के कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं 3 से 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट G डॉट बी अ ग्रुप, देन X बिलोंग्स टू G, प्रूव दैट X स्क्वेयर इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ X इज इक्वल्स टू 1 और 2। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने पहला केस कंसिडर किया है, एक्स स्क्वेयर इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स सपोज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स बिलोंग्स टू जी हमको गिवन मिला है, मतलब गिवन दिया है, और एक्स रेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हमने मतलब स्कूल में थे तभी पढ़ी है कि एक्स की पावर जो रहती 0 तो इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आती है। तो उसके बाद देखते हैं हम, एक्स रेस टू 1 इज इक्वल्स टू 1, एक्स रेस टू 1 इज इक्वल्स टू 1 implies x is equals to 1. Then if x is equals to 1 implies mod x is equals to 1. If x not equals to 1 implies mod x not equals to 1 in bracket x dash not equals to 1, and as x square is equals to 1 implies mod x is equals to 2. अभी हम केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। सपोज mod x is equals to 1 or 2 if mod x is equals to 1 implies that x is equals to 1 implies that x square is equals to 1, 1 square is equals to 1. So if mod x is equals to 2 implies x square is equals to 1. So ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। प्रूफ। Second problem is, let G be a group and x belongs to G. Prove that if mod of x is equals to n for some positive integer n, then x raised to minus 1 is equals to x raised to n minus 1. तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, मतलब प्रूव करते हैं ये। सो लेट स्टार्ट। मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू n, ये हमको गिवन दिया है, implies x raised to n is equals to 1. 1 मतलब आइडेंटिटी of G. Then x into x raised to minus 1 is equals to 1 is equals to x raised to minus 1 into x. Then 1 is equals to x raised to n is equals to x into x raised to n minus 1 implies x raised to n minus 1 is equals to x raised to minus 1. 1 is equals to x raised to n is equals to x raised to n minus 1 into x. Inverse
इज़ यूनिक। पहले वीडियो में हमने मतलब पहला वीडियो की जो हमने जो पहले वीडियो देखे हैं उसमें हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है कि इन्वर्स इज़ यूनिक, इन्वर्स कैसे यूनिक होता है, इन्वर्स की डेफिनेशन एंड, तो वो वीडियो आपने देखा होगा तो वो भी देख लो। So we can prove by associativity. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिविटी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट G be a group and X belongs to G. Prove that mod of X is equals to mod of X raised to -1। तो ये हमको प्रूव करना है इस एग्जाम्पल में। तो पहले एग्जाम्पल में सिर्फ x रेस्ट टू -1 इज इक्वल्स टू x रेस्ट टू n-1 था। तो ये वीडियो में मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेस्ट टू -1 है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज mod of x is equals to n implies x raised to n is equals to 1। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। देन वेयर n is equals to least positive integer such that x raised to n is equals to 1 when x raised to -1 is raised to n is equals to x raised to -n is equals to in bracket x raised to n bracket raised to -1 is equals to 1 raised to -1 is equals to 1। इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mod of x is equals to mod of x raised to -1 is equals to 1। From equation 1 and 2 mod of x equals to mod of x raised to -1 is equals to 1। Then it implies that mod of x raised to -1 less than or equals to n। Then if there exists m less than n such that x raised to -1 bracket raised to m is equals to 1, implies that x raised to in bracket x raised to m bracket raised to -1 is equals to 1, implies that x raised to m is equals to 1 raised to 1 is equals to 1। Implies that x raised to m is equals to 1
implies that mod of x less than equals to m mod n less than equals to m. This is contradiction. There exists m not equals to n such that x raised to minus 1 raised to m is equals to 1 implies mod of x raised to minus 1 is equals to n.